Switzerland. हेलो। के साथ क्या हाल भाई? बढ़िया आपसे। गुड गुड। चलिए शुरू करते हैं। फार टू वेयर वी लेफ्ट इट यस्टरडे, वहां से आगे चलते हैं एंड विल ट्राई टू फोकस कि हम लोग मैक्सिमम पोर्शन आज कवर कर पाए. सो क्विक रिकैप व्हाट वी डिड यस्टरडे. We all started with FAR 2. We covered what is change in accounting estimate. It has a prospective impact. We checked about change in accounting principle. It has retrospective effect. Take exception in your PP&D, even though it's a change in accounting principle, the treatment will remain prospective. Error correction, again, it's a retrospective application. Now, जब हम बोलते हैं retrospective, तो उसका मतलब क्या होता है? We Error have to check. correction is retro. Okay. It's a retrospective, yes. Prior period adjustment, it means you are correcting the earlier periods in your financials. Now, when we say it's a retrospective or a prior period adjustments, इसका मतलब क्या है? You have to first decide whether you are a SSC reporting or non-SSC reporting. If it's a SSC reporting, you are supposed to do a comparative financial statement. In that situation, you have to correct earliest period presented का beginning retained earnings. However, if you are non-SSC filer and you are just following US GAAP, comparative financials are not required, then only current year beginning retained earnings needs to be adjusted for. And we saw a few example of change in accounting estimates, principles, and we saw कि हमें सिर्फ direct effects पे focus करना है. There could be a lot of indirect effects. For example, a bonus calculation or a deferred tax calculation. All those indirect effects are not changed in the accounting. Only the direct effects like revenue, cost of sales, any direct income taxes, all those effects are only given to the opening retained earnings. Then we saw error correction, the example of it, retrospective application example of it. Then we saw adjusting journal entries as well. What happens in case you have a deferred revenue or a prepaid expenses, how your A is equal to C plus L works in that particular scenario. Plus, we saw a one big example which is given in your Becker textbook with 8 adjustments. And we saw whether asset is getting increased, decreased, or liability equity section is getting changed, or income statement is getting changed. Yesterday, we wrap up the session with notes to accounts. We saw there is note number 1, which is a fundamental critical accounting policies. You only give the theoretical aspects, dollar numbers or account balances. All those things are not shown. यहाँ पर हमने कनेक्ट किया था हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions जो हमने फर्स्ट सेशन में किए थे. वन ऑफ द assumption is consistency. Consistency बोलता है कि you have to keep following the same accounting method year on year and it is not supposed to be disclosed unless it is not followed. तो यहाँ पर भी अगर आपने consistency follow की है, you are not supposed to disclose it. लेकिन अगर आपने consistency follow नहीं की है, then you have to disclose what change in accounting principle has taken place, whether it is required by law, required by accounting standard, better preparation and presentation of the financial statement, its quantitative and qualitative effect as well. Apart from these notes to accounts, you also disclose other things, the risk, the uncertainty which your company faces, any significant events expected in future like merger, demerger, discontinuing operation, any political instability or a concentration risk which are applicable to your company. So all those things we saw forms part of your notes to accounts. अब आगे चलते हैं. यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आपको? No. चलिए आगे चलते हैं. मॉड्यूल 5 आपके बैकर का विच टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट्स. अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स होता क्या है? लेट्स ड्रॉ अ टाइमलाइन. Suppose your year starts at 1st January 2025. It ends at 31st December 2025. But this doesn't mean कि आपके 31st December को financial statements ready होंगे. There is a lot of post year end adjustments that take place, audit take place, and then financial statements become available to issue to your investors or shareholders or other stakeholders. So let's say you
started year on January 25, you ended the year on 31st December 25. Let's say now the date is 28 Feb 2026. This is the date. Let's put headers as well. This is the start of the year. This is the end of the year. This is the date on which financial statements are approved by board of directors. And let's say then you have financial statements are available to your stakeholders. Let's say 2nd of March 2026. And let's say if you are an SEC entity, suppose you are an SEC entity, and so you have done an SEC filing of your financial statement to 3rd March 2026. So whatever event happens from the end of the financial year to the date when financial statements are ready, so this timeline is called a subsequent events. Now this subsequent events may be a type 1 event or maybe a type 2 event. Type 1 event, if it is, then you are supposed to change your financial statement and update your 31st December 2025 financial statement. If it's a type 2 subsequent event, you are only supposed to give a disclosure in notes to accounts. Type 1 क्या होता है, type 2 क्या होता है, let's understand in a minute. But the concept says कि आपका year खत्म हो गया, वहां से लेके the date when financial statements are available for use, वो time period को बोलते हैं subsequent event. In that time period, you have to decide whether any event has taken place. Is it in the nature of type 1 event or a type 2 event? Available for use is when it's approved by the board of directors or till when it's available to the stakeholders. Multiple conditions are there, even some cases are SEC filing. तो हम उसकी conditions देखते हैं. If in which scenario it's approved, in which scenario it's available, in which scenario it's SEC filing. तो हम तीनों situation को consider करते हैं. ठीक है, सबसे पहले just base clear है. What is the meaning of subsequent events? Yes. चलिए. Now, what is the definition? Events and transactions which are occurring after the balance sheet date, but before financial statements are issued or available to be issued. ये टाइम फ्रेम को बोलते हैं subsequent event. टाइप 1 इसको हम बोलेंगे recognized subsequent events. टाइप 2 इनको हम बोलेंगे non recognized subsequent events. If it's a type 1, that is a recognized subsequent event, then you are supposed to adjust your financial statement. If it's a non-recognized subsequent event, तो आपको देखनी है materiality. If it's material, then a disclosure is required. If it's immaterial, non-recognizable subsequent event, even disclosure is also not required. तो पता कैसे चलेगा कि कोई इवेंट recognized है या non-recognized है? So there is a one criteria that decide, a criteria which says an event and evidence existed on a balance sheet date. तो अगर कोई इवेंट हुई है from balance sheet date to the date when financials are issued, उसका कोई एविडेंस बैलेंस शीट डेट पे अवेलेबल था, तो उसको हम बोलेंगे recognized subsequent event. वापस चलते हैं टाइमलाइन पे. What we are saying कि if any subsequent event that has taken place here, अगर इसका कोई भी एविडेंस आपको 31st दिसंबर को अवेलेबल था, if yes, then it becomes your recognized subsequent event. If no, it becomes your non-recognized subsequent event. Now, what are the few examples? Let's say 31st दिसंबर को आपके कस्टमर ने आपके ऊपर एक लॉ सूट फाइल किया था, and let's say you predicted कि आप ये लॉ सूट हारोगे and you created an estimated provision of 100K. Now इसका मतलब आपको 31st दिसंबर को एविडेंस था कि आपके ऊपर लॉ सूट फाइल हो चुका है and there is a possibility कि आप ये लॉ सूट हारोगे. Now before financials are issued, let's say on 16th of January, कोर्ट का जजमेंट आ गया, we lost the case and कोर्ट ने हमें बोला कि you have to pay $175,000 of penalty to the customer. Now this becomes a subsequent event, type 1 event, which is recognizable event. Why? Because litigation हुआ था, इसका evidence exist कर रहा था. Before financials got issued, litigation final हो चुका है. Now you know कि आपका जो liability है वो 1 lakh तो estimated था, but you have now actual amount available which is $1,75,000.
So you are going to go back and adjust your financial statement, and you will create a provision at $1,75,000 and not $1 lakh. So this is called a recognized subsequent event, Sorry, can जहां you पर repeat आप the last point? सो आपने सबसे पहले क्या किया, 31 दिसंबर को प्रोविजन क्रिएट किया 100K का. Now, when you reach to 16th of January, आपके financials issue नहीं हुए थे, and you got to know कि आपकी actual liability है वो 1,75,000 है. So now there is no point कि आप financial statements prepare करो by showing 1 lakh का liability, because you know the actual number is 1,75,000. So when financials will be issued for FY 2025, you will present your liability at $1,75,000 and not $1 lakh. तो आपने 1 लाख से 1,75,000 का जो एडजस्टमेंट किया, विच इज $75,000, it is called a recognized subsequent event adjusted in your financial statement. Okay. ठीक है. अनदर एग्जांपल, लेट्स से अ बैंक करप्सी. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कस्टमर था, लेट्स से ही हैज एन अकाउंट्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग ऑफ $50,000. कस्टमर पे नहीं कर रहा था, लेट्स से सिंस लास्ट 1 ईयर, एंड देयर वाज अ चांस कि कस्टमर बैंक करप्सी में जा सकता था. नाउ लेट्स से ऑन अगेन, लेट्स टेक द सेम डेट 16th of January, कस्टमर एक्चुअल बैंक करप्ट हो गया. सो नाउ व्हेन यू प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट प्रिलिमिनरी ऑन 31 दिसंबर, आपने बैलेंस शीट में अकाउंट्स रिसीवेबल शो किया था, बट बिफोर फाइनेंशियल्स आर इश्यूड, आपको पता चल चुका है 16 जनवरी को कि आपको ये कस्टमर से कोई भी पैसा आने वाला नहीं है. सो इन दैट सिचुएशन अगेन दिस बिकम्स योर रिकॉग्नाइज्ड सब्सिक्वेंट इवेंट, और आप आपका अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो जीरो कर दोगे. यू कैन नॉट प्रेजेंट $50,000 ऑफ द AR एज अ 31 December बैलेंस शीट. Why? Because condition of bankruptcy existed on balance sheet date. क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलो, कोई हो सकती है नॉन रिकॉग्नाइजेबल सब्सिक्वेंट इवेंट. इसका मतलब क्या है कि एविडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बैलेंस शीट डेट पे. फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि सेम कस्टमर है $50,000, और ये कस्टमर बहुत अच्छे से आपको पेमेंट कर रहा है, एंड दिस 50,000 यू ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू कलेक्ट. बट सडनली 16 जनवरी को कस्टमर के फैक्ट्री में आग लग गई, and he is done with his business. He has no money left, and he filed for the bankruptcy. And 27 January ko he become a bankrupt. Now this is a type 2 subsequent event, because 31st December को आपको नहीं पता था कि कस्टमर bankruptcy फाइल करेगा या नहीं करेगा. The event started, the evidence came first into your notice only on 16th of January. अगर आपको 31 दिसंबर को पता होता कि ये कस्टमर बैंक करप्ट होने वाला है, देयर इज अ चांस, तो इट बिकम्स अ टाइप 1 इवेंट. लेकिन आपको फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन पता चली 16th of January को, there was no evidence of this information on 31st December, so this becomes a non-recognizable subsequent event, and only disclosure is required if the amount is material. Another example, business combination. You are expected to do a merger with so and so company, और ये information आपको पता चली let's say only on 5th of February. There was no evidence on 31st December कि आप कोई company के साथ merger करने वाले हो. So this becomes a non-recognizable subsequent event. Only disclosure is required. और let's say inventory. आपके पास inventory आपकी balance sheet में थी let's say $50,000 की, एंड सडनली 7th of February को आपके फैक्ट्री में फायर हो गया, एंड दिस इन्वेंटरी इज नाउ ऑब्सोलेट, यू कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. स्टिल ऑन 31st December बैलेंस शीट आप इन्वेंटरी पूरी शो करोगे $50,000, बिकॉज ऑन 31st of December देयर वाज नो एविडेंस कि 7th February को फायर होने वाला है. So this becomes a non-recognizable subsequent event. So if it's a non-recognizable, only disclosure is required if the amount is material. क्लियर है यहाँ तक? Yes. नाउ आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट टाइम फ्रेम नीड्स टू बी इवेल्युएटेड, सो हम क्या बोलते हैं कि इफ द कंपनी इज डूइंग द SEC फाइलिंग, इट्स अ पब्लिक कंपनी, इश्यूअर कंपनी, तो आप चेक करोगे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके जब SEC फाइलिंग एक्चुअल में कंप्लीट होती है वो टाइम फ्रेम. So this is called a financial statements when they are issued to public at large, which means SEC filing is done.
सो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके एसएससी फाइलिंग का टाइम फ्रेम आप चेक करोगे इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी. However, अगर आपकी नॉन पब्लिक कंपनी है, then you check the date when financial statements are available to be issued. So let's say on 28th of Feb को board of directors ने इसको approve किया and 2nd March को it is now available to issue. So if it's a non-public company, you check available to issue. Now the date when financials are approved, this is covered under your IFRS principles. So if you study by chance IFRS, somewhere the word used is approval of the board of directors is the last day. For US GAAP non-SEC, the date when financial statements are ready to be shared with the stakeholders. If you are doing US GAAP SEC filing, then actual filing when it takes place to the SEC. Clear है यहाँ तक सारे concepts? Yes. Aren't they ready when they're approved? Generally, yes, they are ready when they approve, but there are few legal formalities might still be pending. So हो सकता है कि board of directors ने इसको approve कर लिया है. It has just gone for the final printing, final formattings, and maybe it may take 1 or 2 extra days of time. So maybe they are available after 1 day or maybe 2 days time frame. तो अगर आप मेरा भी example देखोगे, I took 28 Feb and 2nd March, not a lot of time between them. Okay. चलिए, let's see few examples in the slide. Don't look at the answers on right hand side. Read through and figure out करो कि क्या ये टाइप 1 इवेंट है या टाइप 2 इवेंट है. एग्जाम्पल क्या दिया है? अगेन दिस इज देयर इन योर बैकर. यू आर अ एसएससी फाइलर. आपका बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर ईयर 3 और आपने एसएससी में फाइलिंग किया है 31 मार्च ईयर 4 को. So first of all, what is your subsequent event का period? December 31 year 3 से लेके March 31 year 4, ये time frame को हम बोलेंगे subsequent event का time frame. Now there are few events that have taken place, so just go through and decide whether these are type 1, which is recognizable event, or type 2, non-recognizable events. First is type 1. So lawsuit filed in year 2, so already on 31st December year 3 आपके पास information evidence था about the lawsuit कि आप जजमेंट आया आपको कि you have to pay 600 के, लेकिन आपने प्रोविजन करके रखा था 725 के का. But now since you know the actual amount is only 600 के, आपको नंबर एडजस्ट करना पड़ेगा. This becomes type 1 event, which is a recognized event. Financial statements are adjusted. चलिए सेकंड नंबर पे आइए. Type 2. टाइप 2 बिकॉज एनीवेज मर्जर अभी तक हुआ नहीं है. इट्स अ प्रपोज्ड मर्जर, सो एनीवेज देयर इज नो अकाउंटिंग इवेंट, बट इट्स अ मटेरियल इवेंट. इसका आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. एंड अनदर कॉन्सेप्ट कि जब 31 दिसंबर था देन यू हैड नो एविडेंस कि आप मर्जर करने वाले हो. थर्ड सिनेरियो. But here it doesn't say anything about that we know that they were gonna get bankrupt. So why is this So not you type 2? had a word where it says that is a significantly aged invoice. That means you are predicting that this customer is not going to pay. He may going to default. Maybe आपको नहीं पता है कि actual bankruptcy होगी. But what is the crux out of bankruptcy कि आपको अब ये पैसा नहीं मिलने वाला है. So on 31st of December you predicted because you had an aged invoice कि आपको पैसा नहीं मिलेगा. And before financials आपके issue हुए वो चीज confirmed हो गई because of the bankruptcy. So bankruptcy is just an event. However, what is the crux behind the bankruptcy कि जो आपको पैसा मिलने वाला है कस्टमर से वो अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. So why it's a recognized event? Because 31st दिसंबर को आपको पता था कि ये कस्टमर अब लॉन्ग टाइम से पे नहीं कर रहा है. So there is a risk कि आप कुछ भी कलेक्ट नहीं करोगे. और ये चीज जनवरी में कंफर्म हो गई बिकॉज कस्टमर ने बैंकरप्सी फाइल कर दी. एंड जब बैंकरप्सी फाइल हो गई तब तक हमारे फाइनेंशियल इश्यू नहीं हुए थे. So by default, it becomes a type 1 event. Last Last is one. type 2.
Why it's type 2? because it happened in February and we were not expecting it. राइट, सो Or 31 near, दिसंबर को आपको नहीं पता था कि फ्लड आने वाला है और कस्टमर अपना बिजनेस बंद कर देगा. परफेक्ट. चले आगे. चलिए, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर सब्सिक्वेंट इवेंट इन योर बैकर मटेरियल. सो क्विकली एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं. सो ओवर टू यू. मॉड्यूल 5, डेफिनेशन, रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट, नॉट रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट, इवैल्यूएशन पीरियड हमें क्या सिलेक्ट करना है. एंड आई थिंक इट्स द सेम एग्जांपल. अगर आपको एक बार क्विकली जस्ट वॉक थ्रू करना है तो वॉक थ्रू कर लो. एंड देन वी एंड दिस मॉड्यूल एंड देन विल स्टार्ट विद अनदर स्मॉल कॉन्सेप्ट. सो ओवर टू यू. एक बार पूरा पीडीएफ है, 5-10 मिनट्स का टाइम लो, इसको पूरा गो थ्रू कर लो. डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग मेरे को पूछ लो अभी. yeah. ठीक है, डन यहाँ तक. ऑल राइट, आई थिंक दैट इज इट. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, विच इज अवर फेयर वैल्यू मेजरमेंट. एक बार हम क्विकली इसको गो थ्रू करेंगे, बट बिफोर वी गो थ्रू इसको हम पहले थियरेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट. थियरी बना के इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया गया है, बट इट इज नॉट दिस मच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. सो अगेन द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज द फेयर वैल्यू मेजरमेंट. फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, एंड इन विच सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज विच टाइप ऑफ फेयर वैल्यू. सो जब भी आप कभी भी कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वर्ड यूज करोगे फेयर वैल्यू,
तो फेयर वैल्यू का सीधा मतलब होगा ये स्लाइड में से जो रेलेवेंट चीज है वो। नाउ जनरली, hypothetically, generally in 99% of the case, fair value का मतलब होता है exit price. What is the meaning of exit price? आपको अगर ये ट्रांजैक्शन में से बाहर निकलना है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा या आपको क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं एग्जिट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आप रह रहे हो एक अपार्टमेंट में एंड लेट्स से वो अपार्टमेंट का प्राइस है समवेयर बिटवीन 100,000 टू 120,000। यू डोंट नो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू ऑफ इट। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू, अगर आपको जानना है कि अगर आपने आज ये अपार्टमेंट वैकेट कर लिया, सेल आउट कर लिया, आपको कितना पैसा मिलेगा। लेट्स से यू गेट आफ्टर ऑल डिडक्शन ऑफ द ब्रोकरेज कमीशन एवरीथिंग, लेट्स से यू गेट 97,000। सो 97,000 इज योर फेयर वैल्यू एज ऑन डेट। या आपको कोई चीज परचेज करनी है तो आपको क्या चीज, कितना आपको आज पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। टेक्निकली फेयर वैल्यू मीन्स टुडेज प्राइस, द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट। जनरली टेक्निकल वर्ड्स में हम इसको अगर बोले तो इसको बोलते हैं एग्जिट प्राइस। So let's understand the official definition. So fair value is equal to price to sell the asset or transfer a liability into an orderly transaction between knowledgeable market participant in the principal market at a measurement date. So there is a orderly transaction. It means there is no related party transaction. You expect somebody else will take a rational decision. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रॉपर्टी का प्राइस है $97,000 ना, आप ये प्रॉपर्टी 500,000 में बेच सकते हो ना कोई बंदा ये प्रॉपर्टी 20,000 में खरीदेगा। सो इसका मतलब है इट्स अ नॉलेजेबल मार्केट। यू कैन हैव अ 10% 15% बार्गेन परचेस गेन और लॉस, कि आपका 100,000 का प्रॉपर्टी है, मे बी आप 90 में सेल आउट करो, मे बी आप 1,20,000 में सेल आउट करो, दैट इज अ रीजनेबल मार्जिन डिपेंडिंग ऑन द बार्गेनिंग पावर। So that is a knowledgeable person. लेकिन in no situation your property can be sold for $10,000 or $500,000. Otherwise it becomes a non-orderly or a suspicious transaction. सो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला रैशनल बिहेव करेगा। इट्स अ नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन अ प्रिंसिपल मार्केट, जहां पर ये चीजें जनरली ट्रेड होती है। सो इफ यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, it's a normal market where the brokers are available, the buyer and seller are available. If it's a commodity, it's a commodity stock exchange. If it's a shares and security, it's a stock exchange. If it's a oil, it's a place where futures and options and commodities are getting traded. So in a principal market आप चेक करोगे at a measurement date. Now इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल मार्केट का? फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क में, यू आर नॉट गोइंग टू चेक द प्रिंसिपल मार्केट रेट फॉर मुंबई बिकॉज इट डजंट मेक अ सेंस। आप न्यूयॉर्क का ही रेट आप चेक करोगे। बेसिकली एग्जिट प्राइस आपको आज कितना मिलेगा, आज कितना आप अर्न कर पाओगे, वेर अ पीपल आर रैशनल, सेम डिसीजन लेंगे अगर आप उस प्लेस में होते। नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन अ प्रिंसिपल मार्केट जहां पर आप ट्रांजैक्शन करने वाले हो। सो एग्जिट प्राइस का मतलब है प्राइस टू सेल, नॉट प्राइस टू एक्वायर। मार्केट बेस्ड, सो दिस इज अ मार्केट बेस्ड एंड नॉट एंटिटी बेस्ड। हो सकता है कि आपका फ्लैट बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही लेविश्ड है, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, अब मार्केट में क्या सिनेरियोस चल रहा है आप उसके ऊपर जाओगे, नॉट हाउ यू फील, योर एंटिटी फील कि नहीं मेरा फ्लैट का ओवर वैल्यूएशन होना चाहिए बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ इंटीरियर। नो, when you are taking a fair value concepts, you will take what market behaves, what market think. Principal market where there is a greater volume, greater activity used even if another market is more advantageous. For example, I'm giving you an Indian example. मान लो आपके पास कोई shares है, let's say Discovery के. Now the Discovery is trading on the Bombay Stock Exchange as well as the local stock exchange. सबसे ज्यादा वो शेयर्स ट्रेड होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। सो यू आर गोइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर मार्केट एज अ प्रिंसिपल मार्केट, इवन दो आपको लगता है कि अगर आप एनएससी पे इसको सेल करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, बट इट डजंट मैटर। वेयर देयर इज अ ग्रेटर एक्टिविटी, मोर रेलेवेंट प्लेस टू मार्केट, आपको वही प्रिंसिपल मार्केट कंसिडर करना पड़ेगा। No transaction cost. Fair value excludes the transaction cost used only to find out most advantageous market. नाउ जनरली आप क्या करते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैव अ मल्टीपल मार्केट्स एंड यू आर नॉट
able to decide कि आपके लिए principal market कौन सा है. So if you just want to compare which market you should go, you will subtract the transaction cost. Otherwise, fair value determine करने के लिए आप transaction cost को exclude नहीं करते हो. I'll give you the example. मान लो आपके पास एक कंपनी के शेयर्स है and let's say they are getting traded into a two stock markets currently. एक एक स्टॉक एक्सचेंज में लेट्स से स्टॉक एक्सचेंज ए, वहां पर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं $10 पे. सेकंड पे दे आर ट्रेडिंग एट $12. नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि ये प्रिंसिपल मार्केट आपके लिए कौन सा है. तो आप चेक करोगे कि आपका एडवांटेजियस मार्केट सबसे पहले कौन सा है. नाउ लेट्स से आप जा रहे हो अगर स्टॉक मार्केट ए में, तो आपके पास $1 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है विच गिव्स यू अ $9 का गेन. स्टॉक मार्केट बी में आपको $12 तो मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर $5 का ट्रांजेक्शन कॉस्ट है. तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बाद आपके पास जो पैसा बच रहा है वो हो गया $7. In this situation, stock market A is the advantageous market and you consider this as a principal market if volume is very high. But this is only to identify which market is advantageous for the monetary perspective. अगर कोई आपको पूछेगा फेयर वैल्यू कितना है, तो फेयर वैल्यू इज स्टिल $9 ओनली. यू डू नॉट सब्ट्रैक्ट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. क्लियर? इसके ऊपर आप why is it $9? It's a fair market value of the share. Oh, but then you wasn't it $10 and then you removed the transaction Oh, cost? sorry, my bad. That's a $10. So you will take a gross value without deducting the transaction cost. So it's a $10 is your fair value for the determination. Advantageous market कौन सा है वो पता लगाने के लिए you subtract the transaction cost, not otherwise. ठीक है? Now आपके पास But we'll record it at the highest fair value or the one at no, the most advantageous market. You will record at actual transaction value. ये तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं फेयर वैल्यूज को. फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू है 97,000. यू हैव नॉट सोल्ड द प्रॉपर्टी येट. लेट्स से आप एक्चुअल जब सेल कर दो प्रॉपर्टी, यू रिसीव $99,000. यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट $99,000. This concept is only to identify how to calculate the fair value. Then once we go to a respective accounting standard like RevRec or the PPND, वहां पर जब जब फेयर वैल्यू हमें यूज करना होगा, दे विल से कि हम लोग कौन से टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम कौन से वैल्यू यूज कर रहे हैं. बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस व्हेन यू डू एक्चुअल ट्रांजैक्शन. जब रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू हमको यूज करनी होगी, वी विल सी व्हिच टेक्निक्स वी आर फॉलोइंग इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू. But in the different transaction cost example, उस पे क्या करना है? सो डिफरेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट में फाइनली लेट्स से आपके पास जो शेयर है, आपने डिसाइड किया मुझे स्टॉक मार्केट बी में सेल करना है, तो आपके पास एंड में $7 मिला, तो यू विल रिकॉर्ड $7 एज द सेलिंग प्राइस, $5 एज द कमीशन टू सेल एंड $12 से आप आपका एसेट को राइट ऑफ करोगे. फेयर वैल्यू क्या होगा? फेयर वैल्यू ओनली फॉर द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप मार्केट बी में जाते हो तो विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो रहेगी, लेट्स से $12 इज द फेयर वैल्यू. ठीक है, लेट्स पुट द नंबर्स हियर ताकि कंफ्यूजन ना रहे. देयर इज अ स्टॉक मार्केट ए, देयर इज अ स्टॉक मार्केट बी. लेट्स से देयर इज अ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस. सो लेट्स से वी आर सेइंग $10, वी आर सेइंग $12. ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर आप ए में जाओगे तो आपको $1 का खर्चा होगा, यहाँ पर आपको $5 का खर्चा होगा. The net selling price could be 9 here, it could be 7 here. तो अगर आप confused हो what is the advantageous market, so you deduct the transaction cost. कि अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो ए में करोगे तो आपको $9 मिलेंगे, बी में करोगे तो आपको $7 मिलेंगे. बट इफ somebody ask you what is the fair value, ए का fair value है 10, बी का fair value है 12. Now let's put here actuals as well. आपने एक ही स्टॉक लेके रखा है and let's say when you purchase the stock, आपके पास उसका कॉस्ट था $5 का. नाउ रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे कैरी करना है तो इट्स अ 5. फेयर वैल्यू पे कैरी करना है तो यू विल डिसाइड कि आप कौन सा मार्केट ले रहे हो. सपोज हम फेयर वैल्यू पे कैरी करना चाहते हैं एट ए मार्केट, तो हमारा फेयर वैल्यू 10 हो गया. वी रिकॉग्नाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन हियर. अगेन हम जब इन्वेस्टमेंट में जाएंगे इसको डिटेल में समझेंगे. वी हैव नॉट डन एक्चुअल सेल्स येट.
मान लो अब आपने एक्चुअल सेल्स करने का डिसाइड किया एंड यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्टॉक मार्केट बी, तो आपको पैसा कितना मिलेगा? $7। तो योर एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड। आपको सबसे पहले पैसा कितना मिलेगा? $12 का पूरा आपको पैसा मिलेगा, विच इज योर कैश इनफ्लो। लेकिन आप सामने कैश आउटफ्लो कितना करोगे? $5 का। सो दैट इज अनदर कैश आउटफ्लो ऑफ $7। अब आपका जो कॉस्ट था वो तो $5 था, उसके सामने आपको पैसा मिला कितना? इफेक्टिवली $7। सो $2 इज द नेट गेन ऑफ द ट्रांजेक्शन। लेकिन ये नेट गेन कब रिकॉर्ड होगा? जब आप आपकी सिक्योरिटी को एक्चुअली सेल्स आउट करोगे। ये चैप्टर में इट्स अ थियोरेटिकल चैप्टर। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू ओनली। आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग मेथड्स दी जाएगी, रेवरेक में या ईसीएल में या इन्वेस्टमेंट्स में, कि आपको कौन सी मेथड पे आपके स्टॉक को फेयर वैल्यू करना है या नहीं करना है या कॉस्ट पे रखना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर वी जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हमें एडवांटेजेस मार्केट ढूंढना है तो वी डिडक्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर एडवांटेजेस मार्केट नहीं ढूंढना है, सिर्फ फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो वी डू नॉट सब्ट्रैक्ट द ट्रांजेक्शन cost. What's the difference between fair value and net realizable value? जनरली कुछ नहीं होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर क्लास ऑफ द एसेट्स। एनआरवी आप टर्म यूज करते हो फॉर योर लिक्विड एसेट्स बिकॉज इट्स इजीली रियलाइजेबल इन द मार्केट। हाउएवर फेयर वैल्यू एज आई सेड इट्स अ एग्जिट प्राइस, कि अगर आपको आज ही ट्रांजैक्शन करना है, लेट्स से कि सपोज हाइपोथेटिकली आपके पास एक इन्वेंट्री है। अगर इन्वेंट्री को अगर आपको आज के आज बेचना है, तो लेट्स से यू आर सेलिंग एट 80% डिस्काउंट, तो वो आपकी एग्जिट प्राइस फेयर वैल्यू हो गई। लेकिन हो सकता है कि आप उसको 6 महीने बाद बेचोगे, तो यू विल स्टिल बी सेलिंग कॉस्ट प्लस मार्जिन, तो आपकी एनआरवी तो उसकी हायर ही है। तो एनआरवी इज द प्लेस जब आप सेल करोगे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो आपको क्या पैसा मिलेगा। फेयर वैल्यू मतलब आज अगर आप एग्जिट लेते हो तो आपको क्या पैसा मिलने वाला है उसका। Okay. बट जनरली फेयर वैल्यू इज यूज्ड फॉर योर नॉन करंट एसेट्स रादर देन योर करंट एसेट्स। Again, exceptions है, we will see when we go to AR, when we go to investments, when we do CCL, all those things, we will understand the differences. Okay. ठीक है, now valuation approaches हम लोग क्या कर सकते हैं? So we can go for a market approach. हम देख सकते हैं price from the comparable market transaction. Example, आपके पास let's say a piece of land है। नाउ यू डोंट नो कि आपके लैंड का एग्जैक्ट प्राइस कितना है, बट आपको टच करके ही एक और लैंड है एंड दैट लैंड गॉट सोल्ड लेट्स से लास्ट वीक फॉर $100,000। सो यू कैन टेक अ मार्केट अप्रोच कि अगर आपका लैंड का साइज सेम है, अगर वो लैंड सेल होती है 100,000 में, तो आपकी भी लैंड अप्रोक्सीमेटली वही प्राइस पे सेल आउट होगी। सो यू कैन गो फॉर अ मार्केट बेस्ड अप्रोच। अगेन फेयर वैल्यूएशन के अप्रोच इतने सिंपल नहीं होते हैं। रियल लाइफ में यू हैव टू पुट a valuation experts into a picture, lot of legal and technical formalities take place, and उसके बाद fair value निकल के आता है। सेकंड है, आप इनकम अप्रोच पे जा सकते हो। सो यू चेक कि अगर आपके पास जो लैंड है, अगर आप इसको यूज करते हो टू जनरेट द रेवेन्यू लेट्स से फॉर नेक्स्ट 20 years, तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सो अगर आपके पास मार्केट अप्रोच नहीं है तो आप इनकम अप्रोच पे जा सकते हो। अगर आपके पास इनकम अप्रोच भी नहीं है तो आप कॉस्ट अप्रोच पे जा सकते हो, कि अगर आपको नई लैंड लेनी है यही प्लेस पे, तो आज आप कितना पैसा पे करोगे। सो दिस आर द वेरियस टेक्निक्स विच आर अवेलेबल। मार्केट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। नहीं है तो सेकंड फेवरेबल अप्रोच है आपका इनकम अप्रोच। अगर ये भी नहीं है तो लास्ट अप्रोच इज अ कॉस्ट अप्रोच और अ रिप्लेसमेंट अप्रोच। वाई थर्ड ऑप्शन इज अ लेस प्रेफरेबल? बिकॉज हर एक असेट में अपना न्यूआंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर आर टू शॉप्स। वन शॉप इज अ ग्रेट प्लेस जहां पर एवरी बिजनेस इज कीप ऑन गेटिंग सक्सेस और उसका वैल्यू है लेट्स से $100,000। उसको बाजू में ही एक प्लेस है जहां पर एक साल में 6 ओनर्स ने शॉप चेंज की है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस। So even though you have a same carpet area, you have the same locality, maybe the person who is losing the business is ready to sell the shop for $75,000 only. So replacement approach may not give you the best approach, लेकिन अगर आपके पास option 1, option 2 available नहीं है, in that situation you can still go for a replacement approach. और अगर आपके पास तीनों अप्रोच नहीं है, then you can go for your best estimate.
फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी एसेट लेकर आए हो, लेट्स से एआई का टाइम चल रहा है, एंड हाइपोथेटिकली मैंने एक ऐसा एआई एजेंट बिल्ड कर दिया जो 1 घंटे में सीपीए का सिलेबस कंप्लीट कर देता है, वेरी हाइपोथेटिकली। मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, सो आई कैन नॉट गो फॉर मार्केट अप्रोच। आई डोंट नो कि ये चीज के लिए मैं कितना चार्ज करूंगा, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन अवेलेबल इन द मार्केट, ना इसका कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। सो आई हैव टू यूज माय बेस्ट पॉसिबल अप्रोच। व्हाट आई विल डू, आई विल थिंक कि मेरा ये एआई टूल डेवलप होने में लेट्स से 1 मिलियन का खर्चा लगा है, आई वांट टू अर्न 25% प्रॉफिट ऑन दिस। सो माय करंट अप्रोच विल बी 1.25 million एज द फेयर वैल्यू, बीइंग अ बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मी। ठीक है, एंड अगेन फेयर वैल्यू की बात हम जब जब करते हैं, a lot of judgments are involved, so it's not the straightforward जो हमें स्लाइड पे दिख रहा है, इतना straightforward transactions ना होता है, ना एग्जाम में होगा, ना रियल लाइफ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। Yes. ओके, नाउ आप इनपुट्स क्या क्या लोगे, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स यू शुड यूज। चाहे आपको मार्केट अप्रोच फॉलो करना है आप कर सकते हो, इनकम अप्रोच करना है कर सकते हो, रिप्लेसमेंट अप्रोच कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी अप्रोच के लिए जो इनपुट्स लोगे, वो इनपुट्स आप क्या लोगे, तो उसकी प्रायोरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डिसाइड की है। लेवल 1 इनपुट विच आर मोस्ट रिलायबल इनपुट। तो ये लेवल 1 के इनपुट्स क्या है, वी आर सेइंग द कोटेड प्राइस इन द एक्टिव मार्केट फॉर द आइडेंटिकल एसेट्स। अगेन एग्जांपल, आपके पास डिस्कवरी का एक स्टॉक है, नाउ यू नो कि डिस्कवरी का स्टॉक का एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, सो दैट्स द कोटेड प्राइस एक्टिव मार्केट में फॉर द सेम असेट, सो दैट्स द मोस्ट रिलायबल अप्रोच। बट मान लो आपके पास एक लैंड का पीस है, नाउ लैंड के पीस का वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा से रहता है, सो यू कैन गो फॉर अ लेवल 2 इनपुट्स विच आर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स। दिस आर नॉट एक्चुअल इनपुट्स। हो सकता है कि मैंने एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में एक अपार्टमेंट लिया, आई परचेस फॉर 2 million, you purchase for 2.1 million, the carpet area is the same, but still there is a little bit of difference because it's not exactly the same property, so you can still go for a observable input। कि अगर somebody wants to know कि हमारे प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है, they can take my reference, they can take your reference, they can take somebody else reference, उनका रिस्पॉन्स रहेगा somewhere between 1.9 million to 2.2 million। सो अगर आपके पास एग्जैक्ट एसेट्स के कोड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑब्जर्वेबल एसेट्स, सिमिलर एसेट्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 भी नहीं है, तो आप लेवल 3 पे जा सकते हो, विच आर अनऑब्जर्वेबल इनपुट, विच आर अजम्पशन बेस्ड। नाउ लेट्स से कि मैंने एक फार्म हाउस लिया है विच इज एट वेरी वेरी रिमोट प्लेस, जहां पर कोई आता ही नहीं है। नाउ इफ आई वांट टू नो व्हाट इज माय फेयर वैल्यू, मेरे पास ना आइडेंटिकल एसेट है, ना मेरे पास सिमिलर एसेट्स है। नाउ आई विल बिल्ड माय ओन अजम्पशंस कि ये फार्म हाउस को मैं नेक्स्ट 25 साल तक वैकेशन होम की तरह रेंट पे लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू अर्न दिस मच ऑफ इनकम, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये बनती है, सो दिस इज माय फेयर वैल्यू ऑब्जर्वेबल इनपुट टुडे। सो लेवल 3 इज अ लीस्ट रिलायबल अप्रोच, लेकिन अगर 1 और 2 नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट लेवल 3 पे जाओगे। Clear है? Again, theoretical points, they are not going to ask you a lot of question out of this। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक थिंग्स विल बिकम अ लिटिल बिट मोर क्लियर। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। लेट्स से अ कंपनी इज होल्डिंग अ 10,000 शेयर्स ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन। नाउ यू कैन यूज अ लेवल 1 इनपुट बिकॉज एप्पल के और भी शेयर्स एक्टिव मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, सो यू हैव द सेम असेट इन एक्टिव मार्केट अवेलेबल, so you are just going to use a level 1 input because your Nasdaq price are easily available, so you can just take the price from the fair market and that becomes your fair value very very easily, so that's the level 1 input। पर लेट्स से एग्जांपल नंबर 2 जहां पर आपको लेवल 2 या लेवल 3 पे जाना पड़ेगा। लेट्स से यू हैव अ कमर्शियल बिल्डिंग, आपका ऑफिस एक यूनिक ऑफिस बिल्डिंग है स्मॉल टाउन में विथ अ वेरी फ्यू कंपेरेबल सेल्स। आप लेवल 2 के इनपुट कब यूज कर सकते हो, इफ यू हैव अ सिमिलर बिल्डिंग्स नियर बाय और आपके रेट्स कंपेरेबल है मार्केट में, then you can go for a observable input level 2 which are similar in nature, not exactly but similar in nature।
और अगर आपकी ऑफिस ऐसी जगह पर है जहां पर कोई और बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देयर आर नो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, तो आप क्या करोगे कि आपका जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है वो नेक्स्ट 25 साल तक आपको क्या इनकम जनरेट करके देगा, वो एक कैश फ्लो बनाओ, उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करो. सो वॉट एवर assumptions you use, they are called a level 3 inputs used to estimate the fair values. ठीक है, ऑल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. Yes. चलिए आ जाए बैकर पे. एंड आई वुड आस्क यू टू क्विकली गो थ्रू दी फेयर वैल्यू मेजरमेंट. पूरा एक बार चैप्टर गो थ्रू कर लो, मैंने पूरा क्रक्स आपको बता दिया है. नथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस. इवन आई डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन टू कम आउट ऑफ दिस थियोरिटिकल टॉपिक. लेकिन अगर आपको कोई भी लाइन कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को एक बार पूछ लो. ऑल दिस थिंग्स वी डिड. ऑर्डरली ट्रांजेक्शन मतलब नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. मार्केट पार्टिसिपेंट शुड बी रैशनल. इट शुड बी अ प्रिंसिपल मार्केट जहां पर ये एक्चुअल में काम होता है. मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट आप कैसे ढूंढोगे? यू विल रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट. एक एग्जांपल दिया हुआ है उसका. देन यू आर गिवन द मेजरमेंट फ्रेमवर्क कि आप क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हो, मार्केट अप्रोच या इनकम अप्रोच या कॉस्ट अप्रोच. लेकिन वो अप्रोच के लिए जो इनपुट्स रहेंगे वो लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के हो सकते हैं. एंड देन यू हैव अगेन कपल ऑफ एग्जांपल्स टू फॉलो. एक बार क्विकली टेक 10-15 मिनट्स ऑफ टाइम, पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लो. अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ लो. सो ओवर टू यू एंड देन विल मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट. There's a point. Fair value does not include transaction costs, but may include transportation costs if location is an attribute of the asset or liability. What is सो अगेन द सेम एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया वहां पर, कि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करोगे. लेकिन अगर कोई लोकेशन स्पेसिफिक चीज है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक फैक्ट्री बिल्डिंग लेके रखा है, उसके ऊपर आपने कुछ चीजें बना के रखी है. अब इफ यू वांट टू एग्जिट, और वो लोकेशन को अगर आपको पुरानी कंडीशन में वापस ले जाना है, विच इज योर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो हम पीपीएनडी में देखेंगे. सो दोज लोकेशन स्पेसिफिक कॉस्ट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर मटीरियल and required to ensure transaction complete हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो फैक्ट्री है, मैंने वहां पर एक फ्लोर बना के रखा था मेरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए. नाउ दैट फ्लोर इज नॉट रिलेवेंट फॉर एनी अदर बायर. तो अगर मुझे ये सेल करना है लोकेशन स्पेसिफिक, तो मुझे उसको डिसमेंटल करना ही करना पड़ेगा, विच इज अ प्राइमा फेसी कंडीशन. इफ दोज आर ट्रिगर्ड डायरेक्ट रिलेवेंट कॉस्ट, तो अगर हमें उनको डिडक्ट करना पड़ेगा टू डिसाइड द फेयर वैल्यू. अदरवाइज कोई भी प्रोस्पेक्टिव बायर ये पर्टिकुलर चीज को परचेस नहीं करेगा.
In the first example, Hmm. Just, example one, not this one. Uh, in the second page, yes. mhm. Here in the last point, if there is no principal market, then we are using London's price net of transaction costs having the most advantageous result. Yes. Is this because the quoted stock price is the lowest in London? No. So what the question is saying, ki if you have a principal market available, then straight away you have to use the principal market. So for example, if New York is available, $52 is your principal market, that rate you will use. If London is your principal market, then that particular rate you are going to use. If principal market is not available, then it's a choice of me whether I want to go for a New York or a London. So I will decide most advantageous market. एडवांटेजियस मार्केट आप कैसे ढूंढते हो? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. सो न्यूयॉर्क का फेयर वैल्यू 52 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 646. लंदन का स्टॉक प्राइस 50 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 248. तो 46 बेटर है कि 48 बेटर है? फॉर मी 48 इज बेटर. सो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट इज लंदन 48. लेकिन फेयर वैल्यू क्या होगा? फेयर वैल्यू इज स्टिल 50. फेयर वैल्यू कंसिडर करने में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस नहीं करते हैं. सो द एग्जांपल वी सॉ इन द स्लाइड की एडवांटेजेस मार्केट आप कैसे निकालते हो? कोटेड प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल इज मोर एडवांटेजेस फॉर यू. लेकिन उसका फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है? बिफोर डिडक्टिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि देयर इज नो प्रिंसिपल मार्केट, सो दे गो विद एडवांटेजेस मार्केट. एडवांटेजेस मार्केट कौन सा है? लंदन का, बिकॉज इट हैज अ $48 का नेट वैल्यू. Even though London is the advantageous market at a 48 net value, fair value का calculation कैसे होगा? Amount before transaction cost, which is $50. Okay.
No. डन है, चले नेक्स्ट टॉपिक पे. Okay. So our next topic is module 7, special purpose framework financial statement. Special purpose financial statements होते क्या है? So generally you prepare all your financial statements based on the accrual method of accounting. However, there are certain other bases like आप financials बना सकते हो cash basis पे. Modified cash, this will come under governmental accounting जहां पर आप partial accrual plus partial cash method use करते हो, or even income tax basis of the accounting. So if the financial statements are prepared other than accrual method of accounting, it is called a special purpose framework, OCBOA. It means other comprehensive basis of accounting. So cash base में क्या होता है? A revenue is recognized when cash is received. Expenses are recognized when cash are paid. जनरली ट्रस्ट है, एस्टेट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है या स्मॉल टैक्स पेयर्स है, ऑल दोस पर्सन यूज अ कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग. आपको हेडर्स अलग बनाना पड़ता है, दैट इज वन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट. इफ यू आर यूजिंग OCBOA, योर हेडर्स शुड नॉट बी मिसलीडिंग. तो आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, अदरवाइज पीपल विल अज्यूम इट्स अक्रूवल बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग. तो आपके नेम क्या हो सकते हैं? So you may say a statement of cash receipts and cash expenses, a statement of showing the net position based on the cash method of accounting, a statement of cash movement and cash outflow. So these are the alternative names you can use for the cash based of accounting. मॉडिफाइड अक्रूवल अभी हम छोड़ देते हैं. वंस वी गो टू अ गवर्नमेंटल अकाउंटिंग हम इसको डिटेल में समझेंगे इन योर लास्ट चैप्टर ऑफ फार. कि गवर्नमेंटल एंटिटी हैव टू यूज अ पार्शियल कैश प्लस पार्शियल अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग. Tax basis, a certain entity may also use a tax based of accounting. For example, there is a small taxpayer, he don't want to maintain two sets of books of accounts, एक gap के हिसाब से एक tax के हिसाब से. So he's just preparing his books of accounts as per the income tax filing. So here again your names must change. Name should say a balance sheet as per tax based of accounting, statement of revenue and expenses based on the tax basis of accounting. So Can you repeat how is tax basis being done? So tax basis में क्या होता है? For example, income tax says revenue is recognized when cash is collected. Depreciation, let's say SLMWDB as per GAAP, but income tax allowed modified accelerated method of depreciation. Or let's say under GAAP you follow a provision method for doubtful debts, warranty. Under tax base only actual losses are allowed. So if you are using a tax based of accounting, your accounting principles will change. You recognize revenue when it's earned plus collected. You book the expenses when they are incurred. However, in terms of the provisioning, you are not allowed to do any provision. You cannot have a bad debt provision. You cannot have a warranty provision. You have to treat all those items on the actuals. So tax based or depreciation is another example. Under GAAP method, you can follow SLMWDB. Under tax based, you have to follow a modified cost recovery system. So if you are using a tax basis of accounting, your financial statements will be slightly different than GAAP. So all three methods are also permitted apart from the accrual method of accounting, but you have to ensure that your headers of the financial statements are not misleading and they clearly identify how an accounting is done by the entity. ठीक है, एक बार देखते हैं बुक में. इट्स अ बिग चैप्टर, सो आफ्टर द ब्रेक वी विल गो टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन पार्ट, but let's quickly check what book says. A special purpose framework is also known as other comprehensive based of accounting. It includes a cash base of accounting or modified cash, tax base of accounting, price level adjusted financial statements. For example, you are preparing everything based on the current inflation basis. Again, not acceptable across all the entities and all the format, but there are certain exceptions in certain industry to which this price adjusted financials are acceptable. For example, oil and crudes, maybe you are preparing financial as per the current rates. Or a governmental regulatory basis of accounting. For example, you have a tax law which asks you to prepare the accounting as per the tax method. So generally you will see a cash based, modified cash based and tax based of accounting as other comprehensive basis of accounting. Now general guidelines क्या है? So financial statements का जो title है, it should differentiate from the accrual method of financial statement.
दिस रिक्वायर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटलीस्ट क्या क्या आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कंपलसरी होने चाहिए अंडर अदर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. यू मे नॉट प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन एवरी सिचुएशन, आपके लिए वो एक एग्जम्पशन है. Financial statements should explain the statement of changes in the equity accounts. It's again a similar requirement we have in the approval method of accounting. आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है विच वी अगेन सो अर्लियर इन द डे, जो आपकी नोट्स टू अकाउंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसी है, it should clearly identify a summary of accounting policy you are following. Let's say cash method of accounting policy, tax method, modified accrual method, informative disclosure similar to those required by गैप. अगेन बिकॉज आपके पास कैश मेथड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, टैक्स मेथड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट सिमिलरली जो गैप में डिस्क्लोजर्स होते हैं, सिमिलर डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे फॉर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अ टैक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इट्स अ जजमेंट कॉल. Disclosures related to the items not shown on the face of the financial statement, such as the RPT or subsequent events or uncertainty, they are also applicable. तो जनरल प्रेजेंटेशन की गाइडलाइंस क्या बोलती है, आपको बैलेंस शीट और पीएनएल तो बनाना ही बनाना है, कैश फ्लो यू कैन इग्नोर इट, और आपको सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे एज इफ आप अक्रूवल मेथड में वो डिस्क्लोजर प्रेजेंट करते हैं, चाहे फिर वो डेप्रिसिएशन शेड्यूल हो, चाहे वो रेवेन्यू मेथड हो, चाहे वो अनसर्टिनिटीज हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट इवेंट हो, चाहे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हाट इज द कैश बेस्ड मॉडिफाइड, कैश को अभी के लिए छोड़ देंगे. कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग में आप रिकॉग्नाइज क्या करते हो, under cash method of accounting, revenues are recognized when cash is received and expenses are recognized when they are paid. Cash based of financial statements are generally used by the trust or the small ventures, political campaigns, committee, or even a small tax payer. The cash based of financial statements includes a statement of cash, a statement of equity, statement of cash inflow and outflow. So statement of cash and equity में आप क्या करोगे, it's nothing but kind of your equity. Equity section is your capital section, otherwise then you will have a asset and liability. अगर आपके cash basis पे कोई है तो generally आपकी asset and liability generally नहीं होगी, except your balance at bank or a balance on cash at hand. Otherwise आपकी कोई भी asset and liability आपको देखने को नहीं मिलेगी. Then you have a statement of receipts and expenditure. This is nothing but your income statement on cash basis. मॉडिफाइड अप्रूवल को अभी हम छोड़ देते हैं, मॉडिफाइड कैश को हम छोड़ देते हैं. वी विल सी इन गवर्नमेंटल अकाउंटिंग. इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट. आप कर सकते हो इनकम टैक्स बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So entities that are not required to use the accrual method of financial may choose to present income tax basis of the financial statement as well. In contrast to the cash based of accounting, tax basis of the financial statements are well suited for the company who have a complex tax operations or a tax regulation. यहाँ पर आपको अगेन सेपरेट हेडर्स देने पड़ेंगे. योर हेडर्स कुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड अ लायबिलिटी ऑन इनकम टैक्स बेसिस और अ बैलेंस शीट ऑन अ इनकम टैक्स बेसिस, statement of revenue and expenditure and written earnings on income tax basis, or statement of OCI on income tax basis. यहाँ पर और चीज क्या हो सकती है, tax basis financial statements are prepared based on the methods which are driven by the your income tax authority in your region. So you can have a taxable income, you can have a non-taxable income, you have a allowable expense and you have a disallowable expense. So all those things you can show separately. So maybe a separate line items for the revenue, which is taxable, non-taxable, expenses, allowable, not allowable, maybe deductions, how a net income is arrived, and all the disclosures which we saw in the previous section. आपको significant accounting policy बतानी पड़ेगी, any contingencies are there, subsequent events are there, all the disclosures are also required for the इनकम टैक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अगेन अ वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट अगर आपको कभी पूछा जाए थियरी में, बट नाउ द चैलेंज विल स्टार्ट. सो विल टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स एंड दिस इज अ चैलेंजिंग वन. यू हैव टू कन्वर्ट द कैश बेस्ड फाइनेंशियल टू अ अक्रूवल बेस्ड, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं. सिमुलेशंस विल कम, एमसीक्यू विल कम, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वन. वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. So I am taking a break. आप भी एक ब्रेक ले लो 5-10 मिनट्स का. Once you come back, go to a far हमारी जो गूगल शीट है
दैट इज अ वन शीट जेई एंड लेजर पोस्टिंग। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रेडी करके रखा है। आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर है बिफोर वी गो इनटू दिस चैप्टर इन डिटेल। For all the transaction, I want you to write down journal entry and prepare a T-shaped ledger accounts. So take a break, 5-10 minutes, come back, solve this example, write down the journal entries and prepare a T-shaped ledger accounts here. If I feel we are on a track, हम लोग यहाँ पर जाएंगे चैप्टर में आगे and we will solve the examples which are given here. इफ आई फील वी आर नॉट डन येट, तो हमें पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्मूथ करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी कैन कम एंड वी कैन प्रिपेयर अ फाइनेंशियल्स बेस्ड ऑन दी मल्टीपल अकाउंटिंग मेथड्स। सो टेकिंग अ ब्रेक, आफ्टर अ ब्रेक आप वापस आओ, आप ये एग्जांपल सॉल्व करो। सो आई विल सी यू समवेयर इन 20-25 मिनट्स। और जब भी आपको कोई डाउट होता है तो हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। इफ ऑल गुड वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो ओवर टू यू।
Done. चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड $12,000 ऑफ कैश फॉर 12 months ऑफ ऑफिस रेंट. एंट्री आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, एंड व्हाट इज द लेजर पोस्टिंग यू हैव डन. Debit prepaid asset, 12,000. हम्म. Credit cash, 12,000. और आपने टी शेप अकाउंट में कहाँ में इसकी पोस्टिंग की है? Credited in cash account. सो दिस इज द वन आइटम, क्रेडिट कैश. चलिए इसको कलर करते हैं, डेबिट प्रीपेड एसेट. चलो फर्स्ट इज ओके. सेकंड वन, The debit. received This is 12,000 not a. cash. Sorry, This is received not a. 18,000 cash for the 3 It's months not of a consumption. prepaid. It's a deferred revenue. What's wrong? Hmm. तो हो रही है वही एंट्री पे. व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू. लेजर पोस्टिंग दिखाइए मुझे. एक second. Uh, the, hi. सेकंड. Erase हो गया. I think debit cash 18,000. डेबिट कैश 18,000, क्रेडिट डेफर्ड रेवेन्यू 18,000. ठीक है, चलिए थर्ड एंट्री पे आइए. Debit expense 1,000. Credit prepaid asset 1,000. ठीक है, 1,000 एंड देन यू हैव अनदर 1,000. ठीक है. फोर्थ एंट्री पे Debit deferred revenue. Credit prepaid asset. क्रेडिट No, क्यों प्रीपेड sorry. एसेट होगा? नहीं नहीं गलत एंट्री. Credit revenue. हम्म. चलिए नेक्स्ट पे आइए. Debit expense 5,000. Credit cash 5,000.
पेड 5,000 कैश फॉर सैलरी। लेजर पोस्टिंग दिखा दीजिए आपने। अच्छा, एक्सपेंस में 6,000 डेबिट किस चीज का है? आपका This जो was from the wrong entry. ठीक है, 5,000 एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट, ठीक है। लास्ट एंट्री पे आ जाइए। Debit expense 2000, credit accounts payable 2000. ठीक है, आपका लेजर पोस्टिंग कहाँ पर है? Expense 2000, accounts payable is ahead of expense. एक्सपेंस में 2,000 है, वेयर इज अकाउंट्स पेबल? In the Q column. अच्छा, परफेक्ट। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड। कोई भी क्वेश्चन है, कोई एआई वगैरह टूल से सॉल्व नहीं किया है ना? बिकॉज ये बेसिक्स है, ये अगर Mm, शार्प है तो हम नहीं कर पाएंगे आगे। नहीं ये basic entries थी but I I tried doing this chapter with my previous tutor but we failed doing this because I was struggling while doing this. ठीक है, ये बेसिक क्लियर है। आप टी शेप के अकाउंट्स कैसे बनाते हो? Yes. चलिए, दो चीजें अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्चुअली समझिए कि आपका ट्रांजैक्शन जैसे जैसे रिकॉर्ड होता है, यू पुट अ लेजर पोस्टिंग देयर। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, नॉट रिलेटेड टू दिस एग्जांपल बट अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अकाउंट्स पेबल, अगर आपको क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट्स दिखते हैं तो उसका मतलब क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ इट? We owe. यस, वी इनकर्ड द एक्सपेंस बट वी हैव नॉट पेड, करेक्ट। Yes. अकाउंट्स पेबल में अगर आपको डेबिट साइड्स कोई चीजें मिलती है तो वो क्या हो सकती है? We have p- paid for what services we have received. परफेक्ट, आपने पेमेंट किया हो सकता है। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में डेबिट साइड कोई चीज होती है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? We have provided the service or goods but we have not received the money. परफेक्ट, और क्रेडिट साइड होगा तो? We have received the money for the goods and services. वी हैव रिसीव्ड द मनी अगेंस्ट सर्विसेज वी हैव डिलीवर्ड। चलिए, डेफर्ड रेवेन्यू में क्रेडिट साइड का क्या मतलब होता है? That it's no longer deferred, we earned the revenue. सॉरी, कम अगेन। We have earned the revenue. तो फिर वो डेफर्ड क्यों है? इफ यू हैव अर्नड इट देन व्हाई इट्स डेफर्ड? Sorry, we have not earned the revenue yet. You have received the cash in advance, so that is the deferred revenue. Your entry, आपने 18,000 cash collect किया advance में, services are not delivered yet. So debit cash, credit deferred revenue. So आपकी entry रहेगी deferred revenue increased और आपका cash increased हो रहा है. So if on a credit side you can see a deferred revenue, it means you are getting the cash but you are not delivering the services. If you see on a debit side deferred revenue, these are the item where you have now started delivering the services and started recognizing the revenue. चलिए, prepaid पे एक बार आता है. What happens when there is on a debit side of prepaid expenses? Um, we have paid for the expense, but we haven't yet incurred it. Perfect. और credit side पे prepaid expense का कुछ entry है तो वो क्या हो सकता है? Uh, we have expensed what we paid. Exactly. ठीक है, ये concepts याद रखना. Now why I am asking all these concepts to you? Now what we are going to do is convert a cash based accountings into the accrual or vice versa. तो आपके concepts clear होने चाहिए. Why? For example, if you are following a cash based of accounting, you will have nothing in your debtors account, accounts receivable, because it's a cash based of accounting. But if you want to now convert it into a accrual method of accounting,
आपको चेक करना पड़ेगा कि जितना कैश कलेक्ट हुआ है उसमें से कितना रिकग्नाइज होना चाहिए. सो हाउ मच शुड बी द रेवेन्यू, हाउ मच शुड बी द डेफर्ड रेवेन्यू. What's और the debtors एक्सपेंस, accounts? डेटर इज अकाउंट्स रिसीवेबल. और फॉर एग्जांपल आपने प्रीपेड एक्सपेंस किया है. नाउ अंडर कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंटायर अमाउंट इज एक्सपेंस. लेकिन आप उसको अगर अक्रूवल में कन्वर्ट कर रहे हो, देन यू शुड नो व्हाट इज द प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाट इज द एक्सपेंस व्हिच आर इनकर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज. सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. सेकंड, आपको पता होना चाहिए हाउ टू डू द लेजर पोस्टिंग. नाउ दिस इज एप्लीकेबल बोथ अंडर कैश मेथड का भी पता होना चाहिए, अप्रूवल का भी आपको पता होना चाहिए. If you know these four steps, like what is the entry, sorry, what is the entry for cash accrual, what is the ledger posting for cash and accrual, then your chapter will be very, very simple. If you struggle, आप chapter में भी struggle करोगे. Now, before going again to the main chapter, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे formulas दिए गए हैं, again very, very confusing formula, like आप याद नहीं रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने दिया है कि अगर कैश बेस्ड रेवेन्यू को अक्रूवल में कैसे कन्वर्ट करोगे. सो कैश बेस्ड रेवेन्यू प्लस एंडिंग ईयर माइनस बिगिनिंग अनअर्न्ड रेवेन्यू प्लस बिगिनिंग अनअर्न्ड रेवेन्यू. नो, we don't want to mug up the things, we want to understand the things conceptually. So what we will do, we will prepare this T-shaped ledger account and then we will try to identify the answer from this working note, and our answer should match with what answers are given in the book. Again, we are not jumping straight away into the examples which are given in the book because these examples are slightly advanced level. So let's do a one basic example and then we will move to the better one. For example, your example number 1, आपको क्या पूछा गया है, अक्रूवल में से आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग में चीजों को कन्वर्ट कीजिए. सो व्हाट इज द सिनेरियो, योर अक्रूड रेवेन्यू इज $1,50,000. Their accounts receivable beginning are $20,000. Accounts receivable closing are $35,000. So what is the cash based revenue? कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? So now our key aspect here is accounts receivable का T-shaped ledger account. So let's prepare accounts receivable का ledger account. So you have something called debit amount, you have something called credit, and you have amount. So what is the opening balance of accounts receivable? It's $20,000. So I'll just put opening balance $20,000. What is the closing balance? It's $35,000. In ideal world, your debit has to match your credit. So I'm just doing a total here. Your debit has to match your credit. Now, first of all, accrued revenue. What is the journal entry for accrued revenue? Oh, sorry, but before that, how is it matching? Sorry, 20,000, what's 20,000? that's the opening accounts receivable on 1st of January. Okay, but in the T account you made, what's the 20,000 there in the So this is bottom? opening balance or balance brought forward, and this is balance carry forward. Yes, but under this, Sorry, under this means, row 36. sorry, I'm not getting your question. आपने 20,000 और 35,000 नीचे लिखा है टी अकाउंट के, वो क्या That है? is the total. That's a grand total. So ultimately, we have to make sure our ledger matches. So debit has to match credit. अभी नहीं हो रहा है. We will see जब हम एंट्री पास करेंगे. Ultimately, ये अकाउंट्स हमारे मैच कर जाएंगे. So this is your grand total. Hmm. This is your opening balance $20,000 given in the question. This is your closing balance 35,000 given in the question. Now my question to you is, what is the journal entry for the accrued revenue? Um, we have earned this or we have not earned this? आप बताओ accrued revenue का क्या मतलब होता है? We have earned it. Yes, that is why it's accrued. Accrued का मतलब you have already delivered the things. अगर ये deliver ना होता तो ये होता आपका deferred revenue या on revenue.
but it's accrued revenue, you have earned it. So what is the entry for this? Debit account receivable 150,000, credit revenue 150,000. ठीक है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल में मैं कौन सी साइड पे कितनी अमाउंट रिप्रेजेंट करूं? Debit side 150,000. Debit side 150,000. Description will be sales revenue. Now, can I say my debit has to match credit? Debit is 1,70,000, credit is 35,000. So there is a balance coming out here. A balance is of 1,35,000. If difference is coming on the credit side of accounts receivable, what this can be? That we have received the money for some of the revenue we earned. When I say our cash collected is 1,35,000. Yes. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कैश बेस्ड रेवेन्यू? कैश बेस्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है? जितना आपने कलेक्ट किया उतना ही आप रेवेन्यू शो करोगे. अंडर अक्रूवल यू आर शोइंग रेवेन्यू ऑफ 1,50,000, बट अंडर कैश हमारा रेवेन्यू कितना होगा? 1,35,000 which is we have collected. So this is what we have now converted our accrual based revenue into our cash based revenue figure. Make sense? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes. नाउ यही चीज का आपको बुक में उन्होंने फॉर्मूला बना के दिया है, बट आई डोंट प्रेफर टू गो फॉर द फॉर्मूलास. सी दिस इज द फॉर्मूला. अगर आपको कैश में से अप्रूवल में कन्वर्ट होना है तो योर फॉर्मूला इज वर्किंग लाइक दिस. आपको अक्रूवल बेस्ड रेवेन्यू दे दिया है 1,30,000. So we are straight away putting 1,30,000 as our accrual base of revenue. Sorry, 1,50,000. So your 1,50,000 comes here. आपके पास ऑन रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, so this is 0 0. बिगिनिंग ईयर एंड एंडिंग ईयर. आपका एंडिंग ईयर कितना दिया है? सो दे हैव गिवन यू एंडिंग ईयर 35, बिगिनिंग ईयर 20. सो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? कैश बेस्ड रेवेन्यू प्लस 20 माइनस 35 गिव्स यू 1,50,000. तो बैलेंसिंग फिगर क्या है? कैश बेस्ड. आप सिंपल मैथमेटिक्स करोगे, आपका नंबर अगेन निकल कर आएगा 1,35,000. There are two ways to solve this problem. एक, आप ये formulas का रट्टा लगा लो. You remember all this formula: cash to accrual, accrual to cash, prepaid to expense, expense to prepaid, all the things, and put the numbers into the format और आपको आंसर मिलेगा. नहीं करना है, विच आई जनरली प्रेफर नहीं करना चाहिए, हमेशा एक टी शेप का लेजर अकाउंट बना लो एंड सी की कहाँ पर डिफरेंस रह रहा है. अगर ये डिफरेंस अकाउंट्स रिसीवेबल के डेबिट साइड पे है, मतलब ये आपने कैश कलेक्ट किया है, दिस इज योर रेवेन्यू अंडर कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग. अगर सेम चीज अगर आपको ऐसे दी होती क्वेश्चन में कि आपका अक्रूड रेवेन्यू आपको फाइंड करना है, आपका कैश बेस्ड रेवेन्यू 1,35,000 है, तो ये आइटम जो है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर बनती और हम इसको बोलते कि हमारा अक्रूवल सेल्स रेवेन्यू 1,50,000 है. So if you prepare a T-shaped ledger account, your answer will never, never, never become wrong. तो ये मेरा प्रेफर्ड A अप्रोच है. question सेल्स रेवेन्यू का आंसर कब है? क्या क्वेश्चन था उसके लिए? क्वेश्चन है व्हाट इज द कैश बेसिस रेवेन्यू. No, for that is 135,000. For the other scenario you pointed out, अदर सिनेरियो में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि फाइंड आउट व्हाट इज अक्रूवल बेसिस रेवेन्यू. अक्रूवल बेसिस का आप रेवेन्यू आइडेंटिफाई करो और आपको क्वेश्चन में दिया होता लेट्स से ऑल द इंफॉर्मेशन, ये आपको सेम इंफॉर्मेशन दी गई होती, यहाँ पर बोला गया होता कैश कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,35,000. आपके पास ये फिगर नहीं होती, सो दिस वुड हैव बीन ब्लैंक. कैश कलेक्टेड 1,35,000. आपका ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल 20, क्लोजिंग 35, कैश कलेक्टेड 135. So what is your sales revenue? It's a balancing figure. So plus this minus this. So 1,50,000 would have been your accrual basis of revenue. तो आपको या तो वो बोलेंगे अक्रूवल में से कैश में कन्वर्ट करो, या आपको वो बोलेंगे कैश में से अक्रूवल में कन्वर्ट करो. So either you prepare a T format and get the answer ready,
इफ दैट फील्स डिफिकल्ट तो आपको ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे एंड जस्ट प्लॉट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, आपको आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आएगा. Brought down balance is on the wherever it is. If it's in the debit side, that means we'll put it in the debit value, right? And balance नहीं, carried forward नहीं. अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है आपका, असेट है या लायबिलिटी है? asset. So it has a debit balance. So brought forward is on a debit side, carry forward is on a credit side. अगर ये होता आपका अकाउंट्स पेएबल या डेफर्ड रेवेन्यू, वो आपका असेट है कि लायबिलिटी है? Liability. तो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता और कैरी फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आता. सो यू हैव टू चेक अगेन हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी है. एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा. लेकिन कोई चीज आपकी लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में होगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा आपका डेबिट में होगा. आपके एग्जाम्पल पे चलते हैं, यू ऑल्सो हैव डन द सेम थिंग. यहाँ पर आपने डेफर्ड रेवेन्यू को ओपन किया है. सो डेफर्ड रेवेन्यू जब जब इंक्रीज हो रहा है आपने उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे की है, और डेफर्ड रेवेन्यू जब जब कम हो रहा है आपने डेबिट साइड पे की है. तो अल्टीमेटली आपका जो कैरी फॉरवर्ड निकल कर आ रहा है वो कहाँ पर निकल कर आ रहा है, इट इज ऑन डेबिट साइड बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट. लेकिन प्रीपेड एसेट है, ये आपका एसेट है, तो आपका कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे. तो एसेट का हमेशा ओपनिंग डेबिट रहेगा, क्लोजिंग क्रेडिट रहेगा. लायबिलिटी में हमेशा ओपनिंग क्रेडिट रहेगा, क्लोजिंग हमेशा डेबिट रहेगा. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स Okay. पेएबल, देखो कैरी फॉरवर्ड कौन सी साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे. बट असेट है तो कैरी फॉरवर्ड कौन सी साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे. सर बेसिक फंडामेंटल्स जो आपको पता होने चाहिए व्हेन यू डू अ लेजर पोस्टिंग्स. Okay. क्लियर? Yes. चलिए, आई थिंक विल कॉल इट अ डे. होमवर्क फॉर यू, एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 को आपको प्रिपेयर करना है इन सिमिलर फॉर्मेट. अगर आपके चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ये पर्टिकुलर शीट के, तो हम लोग कल ये चैप्टर को वॉक थ्रू कर लेंगे, बिकॉज हमें इनका आंसर नहीं देखना है. वी जस्ट हैव टू सॉल्व इन आवर ओन वे. If you find this is struggling, I'll help you to solve. We'll get our concepts more better, and then we will come to the book part. So the task for you for tomorrow, example 2, 3 and 4 को try करो in the same fashion prepare करने का. Yeah, these kind of questions come in MCQs or on Both, simulations. both simulations and MCQ, anywhere it can come. So if it comes in a MCQ, then we would to make a whole T account in Excel, or will they give paper and pen? Pen and paper they will give. That is much preferred, right? Because Excel will take time to make a T account. Excel वैसे ही आप यूज नहीं करोगे, because the simulations even if they will give, they will have a tool और वो टूल में फॉर्मूलाज नहीं चलते हैं. तो सिमुलेशंस भी आप पेन एंड पेपर पे सॉल्व करोगे, जस्ट आंसर आप आपके सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करोगे. Okay. ठीक है. सो विल सी यू टुमारो. फॉर दिस वीकेंड योर एग्जाम इज ड्यू फॉर फार 1, फार 2. फार 2 में हम लोग स्किप करेंगे रेशियो एंड रेवेन्यू, उसके अलावा सारे टॉपिक्स. सो मे बी सैटरडे संडे वेन एवर यू आर रेडी फॉर इट. Okay. चलिए, ओके बाय.